Good morning, Pramesh, Parth. Good morning, Rajendra, Rajdeep. So quickly recall where we were in a last session. Anyone else? गुड मॉर्निंग डियर ऑल। कोई तो बताए हम लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किए थे, तब तो हम आगे बढ़ेंगे बेटा। प्रमेश जी, अनम्यूट करिए भाई। यस सर। हाँ गुड बेटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शायद मैंने 3 बार पूछा, अगर आवाज आई हो ना आई हो, अभी आ रही है क्या? Yes sir. It तो sir, today's topic you have shared in group which we will discuss in today ना 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 about बेटा, ना 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 ना, उसमें मैंने बिल्कुल नहीं मेंशन किया था बेटा कि हम फिफ्थ मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। हम अभी फिफ्थ में हैं क्या? no sir. हाँ, वो तो हमने आज की न्यूज़ थी तो मैंने आपको दे दिया कि आप पढ़िएगा उसको और आगे पढ़ते रहिएगा। वो हम फिफ्थ मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, है ना। Yes sir. लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, मैं वो पूछ रहा हूँ बेटा। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। अगर नहीं याद आ रहा तो इतना तो याद आ रहा होगा कि मुझे याद नहीं आ रहा है। No sir, I have remembered. अगर आपकी रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप बताइए बेटा, मैं तो बहुत देर से सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा हूँ। Sir, I बताइए। think types of network हाँ we have to discuss in last lecture. ठीक है। LAN, MAN and WAN network. ठीक है, करेक्ट। दैट वाज अवर डिस्कशन इन लास्ट Last सेशन। lecture. बिल्कुल करेक्ट।
चलिए तो इससे आगे बढ़ सकते हैं, है ना। So we not only discuss about the LAN, local area network, main metropolitan network, area network, WAN wide area network. We also discuss their advantages and disadvantages. Few small three things are pending. So quickly we can finish based on our last session learning. These three are: one is campus area network. This is also the one kind of substitute of a LAN. That's a renaming, or you can say the small label comparative to the LAN. But LAN is LAN itself. You can call the campus area network as a LAN as well. But the certain category the people call as a CAN as well. So campus area, different buildings. For example, Marwadi University. The type of LAN which we are using, generally we call it as a campus area network, CAN. Clear? So hostel building, main building, law building, PG building, they are connected, and the Marwadi University is connected with internet, so that you people can use those services at your home as well. Okay. Then personal area network. This you all have, you all, those who are here, they all have the experience of it. Let's see, yes or no. You have your mobile. Is there, I think all of you have used your mobile hotspot. कभी किसी फ्रेंड के संग, किसी के भी संग कभी तो यूज किया होगा हॉटस्पॉट। आपने अपना इंटरनेट किसी और के संग शेयर किया हो, नहीं किया हो तो एटलीस्ट यू मे यूज योर ओन मोबाइल एंड योर वायरलेस स्पीकर्स, वायरलेस हेडफोन, ईयरबड्स। किए कि नहीं किए? आपके फोन पे गाना चल रहा है और आप एक वायरलेस के थ्रू, एक प्रकार से वाईफाई वायरलेस के थ्रू आप दूसरे पे सुन रहे होंगे, or you are using the internet connection at your home and then you are using the one Wi-Fi dongle. That Wi-Fi dongle like Reliance Jio ने यूज किया था Jio5, उसके जैसा आप डिवाइस यूज कर रहेंगे, and that device is connected with the all the family members mobile phone, so they also can access the same Wi-Fi. So one Wi-Fi router connected with others. You may use the wireless keyboard, sometimes printer or tablet. When you connect your home devices, that's called IoT, Internet of Things. So they call it as a personal area network. कोई डाउट इस पर? कोई डाउट? No. Okay. Good. Now, this image you can fix in your brain, because this is very much important to understand, differentiate. Almost 5 to 10 marks you will get if you register it in your brain perfectly कि लेन क्या है, मेन क्या है, वेन क्या है. तो सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, many things are possible. 100% without this the paper will not complete. कोई भी पेपर MIS का अगर है, स्पेशली अपने सिलेबस वाला, बगैर इस स्लाइड के तो कंप्लीट होगा ही नहीं. But you have to register perfectly what exactly displayed. These dotted lines are differentiating. Clear? So the LAN, the local area, so city is building is specific, premises is specific. Once such a premises joined together, then we call as a main and a city label. When the city or a country level connected to the other part of the world, then we will call as a wide area network. We already know advantages and disadvantages of it, so no need to discuss again. Now, the types of network, the gateway, connection, current, it's like a relay race जो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. Clear?
So here you are getting connected. Marwadi University is connected through the net, and then you are connected through the net. Then only you are capable to access the Marwadi University's server, website, portals, detail. So one network at a one server point or a one point is having connection with the other network. That connection is called the gateway. Clear? That connection is called as a gateway. So what type of a networks are? So networks are basically the three types, basically three types, not only the three types. So basically I'm not saying these are the only one, the other type as well. Well, basically the three types, that's called ring topology. And what exactly they are how exactly you are connected from one computer to the other, and what are the other computers you are in your system, how exactly you are connected. So it's a methods, you can say that all the methods are having their own advantages, disadvantages, characteristics, you can say, on the basis of which you prefer to the one. It's not like that only alone your choice. Based on your business architecture, we generally choose the particular one. So ring, star, and bus topology, I will explain it in the next slide here. So first one is the ring topology. Ring topology actually follows the computer connected one to another in a clockwise or anti-clockwise manner. So whenever you have such a connections, you set the parameter how the information will pass from one system to the other system. Let's say you connect and set the system as a clockwise. So let's say this system want to say something to this system, then the things will happen or go in this particular manner. Clear? Anti-clockwise then again will go in this particular manner. So अगर इसको इससे कहना है तब तो ये डायरेक्ट आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में जाना है तो पूरा रो राउंड करके आना पड़ेगा. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इन अ बिहेवियरल नेचर, कंप्यूटर के नेचर में तो अभी आप नहीं बता पाएंगे, लेन जनरली या लैब्स में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो इस तरीके से फॉलो होते हैं, लेन में भी फॉलो होता है बहुत बार. जैसे हम बिहेवियरल फॉर्म में देखें, if you have any issue related to your study, how you will approach to the top management? We are having a proper channel. Clear? Channel is what? Let's say you as a student will approach to your CR, class representative. CR will approach to CC. CC will approach to the program coordinator. Program coordinator will approach to Dean. Dean will approach to VC. Clear? It's not like that you are visiting to a main building and that too you are on third floor. So third floor is the office of VC. Then you say, since I am at third floor, so why not directly communicate to the VC what's the issue you have? It's not like that. You have to follow the proper channel. मेरा example behavioral level पे समझ में आ पा रहा है क्या? You need to follow the proper channel. ऐसे ही चैनल हम किस में लेते हैं? कंप्यूटर डिवाइसेस में, द सिस्टम. यू हैव टू फॉलो और गो थ्रू वन बाय वन. ये समझ आया क्या बेटा सभी को? समझ आया कि नहीं आया? Okay, now look it to the next. Next is star topology. Star topology is that whenever you are communicating, transacting, or doing something on a network or in server, that the central server must be aware about it, or after getting the confirmation or update from the central server, then only the information will pass. For example, your bank account in any bank and your ATM card, whenever you do any transaction,
that the transaction, that network must follow the procedure. Let's say you are going to you are having the bank account in SBI and you are having the ATM card. You are visiting to SBI ATM. Then you are inserting the card. So what it will do, the system will validate first कि ये क्या 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 नंबर का कार्ड है, किस कोड का कार्ड है, किस बैंक अकाउंट से ये अटैच्ड है. उसके अकॉर्डिंग आपका पासवर्ड क्या है वो पे वेरीफाई करेगा पिन. अगर पिन वेरीफाई हो गया तो वो नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा. देन यू विल, लेट्स से यू आर विलिंग टू विदड्रॉ 10,000. तो आपने तो 10,000 लिख दिया, ज़रूरी थोड़ी वो 10,000 दे ही देगा. इट विल चेक कि भाई 10,000 का रिक्वेस्ट आया है, क्या स्टेटस है इनके बैंक अकाउंट में, कितने पैसे हैं 10,000 या नहीं है. अगर हैं तो क्या करेगा, अलाउ कर देगा कि भाई विड्रॉ हो गया आपका, ये लीजिए. नहीं है तो वो एरर मैसेज दे देगा भाई कि आपके उसमें सफिशिएंट फंड नहीं है. और इस ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, सर्वर में अपडेट कर देगा कि एक अप्रोच हुई या एक ट्रांजैक्शन की अप्रोच हुई जिसमें इनसफिशिएंट फंड था, या फंड था तो 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए. इसके बाद हो सकता है वो आदमी ब्रांच में जाए, ब्रांच से भी विड्रॉ करने की कोशिश करे तो ब्रांच वाला भी जाएगा, भाई 10,000 तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं और चाहिए, तो फिर अपडेट देखेगा कि कितने अभी बचे हुए हैं. क्लियर. लेट्स से दैट यू आर डूइंग थ्रू द एटीएम नियर बाय योर ब्रांच, then you are moving to your mobile and then doing any internet या मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन. तो अब मोबाइल बैंकिंग में तो पता नहीं कहाँ पे सर्वर होगा, बट आएगा कहाँ, वो वहीं सिस्टम पे, आप उसी की वेबसाइट पे लेके जाएगा वो. फिर आपसे बोलेगा कि आप ट्रांजेक्शन करिए. फिर वो किसी और सर्वर से, सपोज आप बोलें कि ये एटीएम है और ये आपका लैपटॉप है, तो अब यहाँ पे जो वेबसाइट्स आप ओपन कर रहे हैं वो ये है. फिर वो कनेक्ट करेगा सर्वर से, देन अगेन चेक कि कितना अकाउंट में बैलेंस है, कितने का परमिशन या कितने का ट्रांजैक्शन करना है, एलिजिबल है, अमाउंट सफिशिएंट है, फंड सफिशिएंट है या नहीं है. ये चीज समझ में आया क्या बेटा. एक एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल से दूसरे एग्जाम्पल में शिफ्ट किया हूँ. स्टार टोपोलॉजी. Whenever any communication is happening between these system, it must go with the center. It will go to center, then update to the other one, whatever information you are looking or accessing. Quickly बताएंगे बेटा, समझ आया कि नहीं आया. Please confirm the type. I've just given you through the example, and that too in a network, how they connected. So in banking or other such transactions, they always get connected through the central server. Okay. Now next is the bus topology. Bus topology is like our electricity connection or cable TV kind of a connection. So look at the central line. The, let's say, electric pole and wires are going on. The running houses, those who are coming, let's say either a electric or a cable connection, whichever in your mind. As soon the house or the house are coming, you are approaching the direct connection and you are accessing that particular thing, electricity or a channels or a television. Clear. Whatever. So that's in a running way. Whatever is want to communicate to the other system, they can easily communicate to them. No centrality, no circularity. Clear. So that's the one beauty of this particular bus topology. So such kind of a systems also established where in the running main line you are having all the facility or connected the server, then it's available for rest all systems. So these are the three basic topologies, the style or the form of connecting the computers in a network.
Is it clear? Okay, so we can move. Transmission media and transmission speed. So transmission, wired wireless form that we will learn, and then we are connecting with whenever you are establishing any MIS or IS in your organization, what kind of a transmission or transmission data or speed you must have. So the expected thing from the system which you are expecting from your MIS may be delivered based on your requirement. So communication medium, the physical transmission form. So twisted wire, ट्विस्टेड में कैसे बोलेंगे, जैसे गर्ल्स को आपने देखा होगा चोटी करे रहते हैं, एक दूसरे में क्या होता है वो डिफरेंट फॉर्म में ट्विस्ट, एक को लेफ्ट दूसरे को राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, इस तरीके से ट्विस्ट कर देते हैं एक दूसरे में. सेम यू में भी ऑब्जर्व इन सीरीज देखा होगा आपने, जो दीपावली के टाइम पे हम घरों में लगाते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, उसमें शायद आपने देखा होगा. सिंपल हाउस में भी कई बार हम जो सिंपल वायर यूज करते हैं उसमें भी शायद आपने देखा होगा. सो दैट्स अ ट्विस्टेड वायर, पेयर वायर, दो वायर. लैन केबल भी अगर आपने देखी हो, नेकेड लैन केबल ओपन वाली, तो उसमें भी पेयर्स ऑफ वायर ट्विस्टेड होते हैं. आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. देन कोएक्सियल केबल, नाम सुन के तो लगा होगा कि सर हम नहीं जानते, बट एवरीवन हैव सीन इट. कहां पर? आपका अपना टेलीविजन कनेक्शन, वेदर फ्रॉम केबल और DTH, डायरेक्ट टू होम, in both the form the wire used, that's called as a coaxial cable, that also we will see in coming slide. And then the fiber optics cable that you may have observed in your roadside. कभी भी गड्ढे वगैरह खोदते हैं या कुछ होता है तो वहां आपने लगभग ऑरेंज टाइप के कलर का वायर आपने देखा होगा खुला हुआ, या उसमें बहुत सारे रेसेस, या कभी फेयर मेले वगैरह में देखा हो, या रोड रेलवे स्टेशन के आसपास, मैं बताऊंगा उसकी भी इमेज, वहां आपने ये चीजें देखी होगी. वायरलेस दैट वी नो वेरी वेल, आइदर द सैटेलाइट थ्रू और अ cellular system, the mobile phone which you are using now. Then transmission speed, speeds is divided in three forms. So bits per second, then hertz, so the frequency, bits per second, then hertz, the frequency you are, and the bandwidth, what are the carrying capacity. So BPS it stands for bits per second. So it depend on its frequency, कि कितना बिट्स पर सेकेंड है, दैट डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी. एंड हाउ डू यू मेजर द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. क्लियर? बैंडविड्थ आपने देखा होगा कि किस बैंडविड्थ पे सिस्टम काम करता है, हाई या लो पर, LTE और LTS वगैरह, ये हम आगे भी देखेंगे इनको. ये वायर, इफ यू हैव दिस वन ओनली, these twisted, this is called twisted wire. Otherwise exactly it's a lane cable, otherwise this one is called as a twisted. तो ये भी twisted है, ये भी twisted है, ये भी twisted है. ये देखे हैं कि फर्स्ट टाइम देख रहे हो? मेरे हिसाब से तो सभी ने देखे होंगे. यस, थोड़ा रिस्पॉन्स आ जाता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं. वी आर ऑन राइट ट्रैक. सेकेंड वन, दैट्स अ कोएक्सियल केबल. अब आप देखेंगे पिछले वाले को, व्हेन यू ट्रांसफर अ डेटा
in this pair, the speed will less because they again are twisted. There is a coating which is preventing the data loss or the special arrangement. But when it comes to this type of cable, the data is speeds quite very high. Look at this, the outside layer generally we have seen in black. व्हाइट भी आपने देखा होगा, कभी कभी व्हाइट भी देखने को मिलता है. इसके बाद जाएंगे तो देयर इज अ नेट काइंड ऑफ अ मैश. सो कॉपर मैश एक नेट के जैसा, जाली के जैसा पतले पतले वायर्स के साथ बना रहता है. अच्छा, थोड़ा सा ऐसा कोई बताएगा, किसी ने देखा है क्या इसको? गुड, सत्यम ने देखा है, अभिषेक, प्रवेश, गुड. तो इस केबल को हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल. ठीक है, ये हो गया नेट. इसके बाद आपने देखा होगा देयर इज अ थिन व्हाइट कोटिंग एलिमेंट. ये बहुत सॉरी थिन बोला, थिक रहता है, ये थिक रहता है. एंड देन इनसाइड यू विल फाइंड द कॉपर वायर. So this is carrying the main data. This is the supported one. That's the reason you are easily getting the HD connection or HD data, HD movies very fast on your television set. आप सोचें अगर फुल HD पे अगर आप मोबाइल पे देखेंगे तो कितना डेटा कंज्यूम होता है और कितनी हाई स्पीड का कनेक्शन चाहिए होता है. आपके अपने DTH पे कितने फास्ट ये चीजें आपको मिल जाती हैं, चाहे केबल पर हो या इस पर हो, डायरेक्ट टू होम पर. दैट कोटिंग एक्चुअली प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम डेटा लॉस, कि जो ट्रांसमिट किया जा रहा है वो इसी पे रहे. जो थिक एक आउटर लेयर बना रहता है मोटा वाला, ये प्रोटेक्ट करता है कि इससे कोई डेटा लॉस ना हो. ये फर्दर प्रोटेक्ट करता है उसको और सेपरेट डेटा के साथ सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, और फिर ये प्रोटेक्ट करता है हमको या उस डेटा को, ताकि कोई डेटा लॉस ना हो, तब जाके ये ट्रांसमिट हो पाता है. Now next one is the fiber optics cable. ये मैं बोल रहा था कि क्या आपने कभी देखा है ऐसे जो डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फेयर्स में, मेले में या स्टेशन के आसपास, या कभी आपने देखा हो इवनिंग टाइम में स्ट्रीट पे लोग ये एक कुछ ऐसी लाइटिंग्स जैसा बेचते हैं कि छोटा सा पॉट रख देंगे, उसमें नीचे को सेल लगा होगा और आपको यहाँ पर इल्यूमिनेट होते दिखेगा स्टार जैसा. गुड, स्मिथ ने देखा है. ये बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म में है. दीज आर कॉल्ड द फाइबर ऑप्टिक्स. इस फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, जो स्पेशल इसकी क्वालिटी है, आप यहां से अगर एक इमेज एंड फॉर्म है, हालांकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, आप यहां से मान के चलिए कि अमेरिका और इंडिया लेट्स से कनेक्टेड विद द वायर. आप राजकोट से अपने एंड पर, जैसे यहाँ पर आपका ये एंट्री हुआ, ऐसे ही यहाँ से बाहर जाएगा तो अमेरिका में होगा. तो इस एंड से अगर आपने टॉर्च से भी लाइट डाली, अपने मोबाइल की टॉर्च से भी लाइट डाली, बिलीव मानिए इमीडिएटली विदाउट एनी डैमेज इन लाइट क्वालिटी, क्लियर, ये सीधा जाके कहाँ निकलेगा, अमेरिका, तुरंत, विदाउट एनी डैमेज. इतना स्पीड और क्वालिटी, कोई डैमेज नहीं होता है. तो टॉर्च की लाइट तो आप देखते होंगे थोड़ी डिस्टेंस पे जाके फेड होने लगती है, बट अगर आपने यहां से ट्रांसमिट किया है तो जिस रेंज से आपने ट्रांसमिट किया था, दैट विल बी रीच टू द आउटर साइड. सो इंडिया इज द, यू कैन से द हाईएस्ट केबल connected in this is Indian companies, not India, Indian companies. रिलायंस और इनके पास, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में फाइबर ऑप्टिक्स के वायर्स बिछाए हुए, सी के साइड से, समुद्र के नीचे नीचे. दैट्स द रीजन वी आर वेरी क्विकली कनेक्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. उनके अपने एक एम्पलीफायर भी होते हैं कि बीच में लाइट कहीं डिस्टर्ब ना हो या डैमेज ना हो तो उसको रीबूस्ट कर देना. अब when you even twist this wire, आप इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ देंगे, कुछ भी करेंगे, nothing will happen. The light will reach to the other end, and through this light only, the quality, depth, bad, blinking, we can transmit the data in a lightning speed. That's the beauty of this fiber optics cable. So one wire will have the different codes, and thousands of connections simultaneously is possible to make through the various coding. How these things will happen, just watch one video so that you can understand even how we are communicating right now, or when you communicate or do any message on the mobile, how exactly it's reached from
sender to the receiver end. Just watch this small video so have a more clarity. Have you ever thought about how you get emails or any other information from any corner of the world within a blink of an eye? This has been made possible by a network of cables, which are laid under the ground and below the ocean. The cables, which carry most of the world's data, are optical fiber cables. They are also used in medical equipment. Let's learn how optical fiber cables work and how they have revolutionized the world around us. Optical fiber cable is made up of thousands of fiber strands, and a single fiber strand is as thin as a human hair. Optical fibers carry information in the form of light. Let's first learn some fundamental behaviors of light to understand the workings of optical fibers. The speed of light changes when it passes through a medium, and this change in speed is expressed by the refractive index. This variation in the speed of the light leads to another interesting phenomenon, refraction. To understand what it is, let us carry out an interesting experiment. In this experiment, light passes through a prism. You can see that at the interface, the light gets bent instead of going straight. This phenomenon is known as refraction. Refraction occurs when light passes from a medium with one refractive index to one with another refractive index. The light bends towards the interface when it goes from a medium of high to one of low refractive indices. Refraction is the reason why a pencil looks bent in a glass of water. This simple refraction technique is effectively used in optical fibers. Now, let's make this experiment a hypothetical one. Using some dopants, we are able to increase the refractive index of the glass in real time. As we increase the refractive index, the light will bend more and more towards the surface. After a time, you can see that the light will pass through the surface of the glass. If we increase the refractive index further, the light will suddenly come back to the first medium as a pure reflection. This is called total internal reflection. The total internal reflection is possible if we increase the incident angle rather than increasing the refractive index. In this case, at a certain angle called the critical angle. The light will come back to the first medium. This phenomenon of total internal reflection is used in optical fiber cables to transmit the light. The simplest form of optical fiber cable is shown here, cylindrical glass with a high refractive index. If the laser strikes the interface at an angle greater than the critical angle, total internal reflection will happen, and the light will reach the other end. This means that light can be confined in the optical fiber over a long distance, no matter what complex shape the fiber forms. Remember, total internal reflection happens between the high refractive index glass and the low refractive index air. However, optical fibers need a protective coating. A protective coating is not possible with this configuration. The introduction of protective material will replace the position of the air and cease the total internal reflection phenomenon. An easy way to overcome this issue is to introduce a low refractive index glass above the core glass, known as cladding. This way, total internal reflection will happen, and we'll be able to use a protective layer. Both the core and the cladding use silica as their base material. The difference in the refractive index can be achieved by adding different types of dopants. The optical fiber we have just constructed won't be able to carry signals for more than 100 kilometers. This is due to various losses that happen in the cable. This loss of signal strength is generally called attenuation. Absorption and scattering are the main reasons for signal attenuation. This is why you see amplifiers in cables after a certain distance. They boost the signal strength and allow signals to be transmitted over a long distance. The power required for the amplifier is drawn from nearby sources. Now, back to the main topic. How does the optical fiber transmit information such as phone calls or internet signals? Any information can be represented in the form of zeros and ones. Assume you want to send a hello text message through your mobile. First, this word will be converted into an equivalent binary code as a sequence of zeros and ones. After the conversion, your mobile phone will transmit these zeros and ones in the form of electromagnetic waves. One is transmitted as a high frequency and zero as low frequency wave.
Your local cell tower picks up these electromagnetic waves. At the tower, if the electromagnetic wave is of high frequency, a light pulse is generated. Otherwise, no pulse is generated. Now, these light pulses can easily be transmitted through optical fiber cables. The light pulses which carry the information have to travel through a complicated network of cables to reach their destination. For this purpose, the entire globe is covered with optical fiber cables. These cables are laid under the ground and below the ocean. It is mainly the mobile service providers that maintain these underground cables. AT&T, Orange, and Verizon are some of the few global players who own and maintain the submarine cable network. A detailed cross-section view of an undersea cable is shown here. You can see that only a small portion of the cable is used for holding the optical fiber. The remaining area of the cable is a mechanical structure for protection and strength. Now, the question is, where does the amplifier get power from under these deep oceans? Well, for this, a thin copper shell is used inside the cable, which carries electric power along the cable so that the amplifiers can be powered. This whole discussion simply means that if optical fiber cables do not reach a part of the globe, that part will be isolated from the internet or mobile communications. If we compare optical fiber cable to traditional copper cable, the optical fiber cable is superior in almost every way. Fiber optic cables provide larger bandwidth and transmit data at much higher speeds than copper cables. This is because the speed of light is always greater than the speed of electrons. The flow of electrons in a copper cable generates a magnetic field, even outside of the cable, that can cause electromagnetic interference. On the other hand, the light, which travels through the optical cable, is always confined within the fiber. Thus, the chance of interaction with an external signal does not exist. One more interesting feature about optical fiber cables is that any light signal which enters from the side has a minimal chance of traveling along the cable. Thus, the optical fiber cables provide high data security. You might be amazed to know that optical fiber was first used in endoscopy, even before it was used in the telecommunications field. In telecommunications, digital pulses are transferred through the optical fiber cable. However, in endoscopic cables, visual signals, which are in the analog form, are transmitted to the other end. We request your support at patreon.com to help us continue our education services. And thank you for watching the video. Yes, कुछ समझ आया होगा, I hope. So this is for the day. The further more things we will discuss in our next session. We will continue our discussion with these connections only, and we will discuss in our next session. Okay.